I would like to ask few questions to Srishti and Akash as well. So as faculty also, we also get these questions. Especially, can you both tell me what have you specifically done in the, in between prelims and main examination? That is a very crucial time. So immediately after prelims, we have students who are still in a dilemma whether they will clear prelims or not, and they keep checking various keys. They are already, they are a lot tensed up and they wait for the date. So the 3 to 3.5 months, and that is the most crucial period according to me. So how well did you use your time during that period? And also, most of them I think would be giving their prelims in 2022. So from now, if you see, they have a good amount of time. Okay, so just before prelims, generally some students I see, they start having second thoughts whether I'm prepared or not. So, and some students who have already given, so they are also worried about peaking at the right moment. So you need, and that's what many toppers also say, we need to peak at the right moment. Otherwise, if you have done all the things right, but just 15 days into the examination, something altogether happens. So, and they feel they're not ready yet, and one more year passes by. So I would like you to address these questions. Thank you, sir. I think about the part where you said just peaking at the right moment. So I would like to share some small story of mine. Just 5 days before my prelims examination in 2020, October, I decided to give a mock test. I thought, हाँ लास्ट में चेक कर लेते हैं कितने नंबर बन रहे हैं, एंड वी यूजुअली ट्राई कि ऐसे 100 के ऊपर मार्क्स आए, सो वी थिंक 100 के ऊपर है तो फाइनल डे ठीक होगा. आई गॉट 43. लास्ट 4 days before the exam, I got 43. And I had revised everything. I was because we got 3-4 months extension, so I revised everything multiple times, and I was very confident कि नहीं, I have done everything. And then I got 43. So I was very disheartened. I thought अब तो नहीं हो पाएगा, अब I have to prepare for another year. So I called one of my mentors and I told him, I was all crying कि नहीं हो पाएगा sir. So he said one thing, do you think this is the paper which is going to, the same paper is going to come on the last day? I said, no sir. Do you think the same way you are going to approach to the paper? I said, no sir. Do you think you've learned something from this paper? I said, yes sir. So he said, okay, then you're doing great, you'll do well. Just go with whatever preparation you're having on the last day. And I think the last day matters a lot. So when I first saw the paper of 2020 prelims day, I went into the examination all 10 minutes, 20 minutes before, and the invigilator gave me the paper. I was shell-shocked because the paper was very tough. Even with my preparation, I thought I would not be able to crack it because the paper was extremely tough even for me. And I went through the whole paper. I could only decipher 10 questions. So I thought only 20 marks, how would I qualify? So then I drank a little water and I took 2-3 deep breaths, and I thought, nahi, if I give up right now, then I'll definitely not qualify. If I try, there is a small chance that I might qualify. So then I started doing my paper from the very first question. Question by question, I tried and put everything which I've read, every article, everything which came to my mind at that moment. And I just placed every part of my knowledge into the paper. And I did not ponder upon whether I'm beating the qualifying score or whether I'm staying into the non-qualifying area. I just left it for the 2 hours and I just did the paper. When I came outside, I told my father, I'm not getting selected. I need to appear again. This paper was very tough. Now all through the day, I cried that nahi ho paega, I have to prepare again. Then when the key came in the night and I checked my score, I got a safe score. What I'm trying to say is that this is where your mental strength plays. If at that moment of the paper, if I decided that I would not attempt the paper wholeheartedly, it's possible, it would have been possible that I would not be sitting here. So
just stay calm at moments where you need to stay calm. Don't fret about things which do not matter, like fretting about what would happen if you do not qualify. Right now you have an opportunity to qualify. Use that opportunity. If you do not qualify, then you would already have to think about something else. पर जब तक टाइम है तब तक तो पढ़ लो, तब तक तो कर लो जितना कर सकते हो, फिर लास्ट में देखा जाएगा. This is what I think worked for me, sir. I mean, yes, peaking at the right time is certainly very important, क्योंकि what happens is कि कुछ लोग बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, कितना ज़्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं कि फिर सब चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ के भी. या फिर कई लोग ऐसा होता है जिनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं होता एंड द प्रीलिम्स इज़ वेरी नियर. सो आई वुड एडवाइस, जैसे मेरा तो स्ट्रैटेजी रहती है कि 2 months या 1.5 months बिफोर द प्रीलिम्स, डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने पिछला कैसा पढ़ा हुआ है, होल हार्टेडली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स. और आई मेड श्योर कि मैंने जितने भी स्टैटिक चीज़ें हैं वो एक बार पूरी रिवाइज हो जाएँ प्रीलिम्स के पहले. सो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि जैसे लक्ष्मीकांत है उसमें 60-70 चैप्टर्स हैं कुछ भी, तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि 10 दिन में करना है तो मैं 6 चैप्टर्स रोज़ लक्ष्मीकांत के ख़त्म करके ही सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. इस तरीके से मेरा एक टाइम लाइन रहती थी बिफोर प्रीलिम्स की, 1.5 months बिफोर द प्रीलिम्स की मुझे रोज़ 2 टेस्ट लगाने हैं, मुझे इतने चैप्टर्स लक्ष्मीकांत के करने हैं, इतने चैप्टर्स स्पेक्ट्रम से करने हैं, इतने चैप्टर्स जो है वो मृणाल के वीडियोस देखने हैं, जो भी है. इस तरीके से एक कंपार्टमेंटलाइज करके मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन स्पेशली प्रीलिम्स का किया था, सो दैट कि एट द एंड जब तक कि मैं एक्चुअल प्रीलिम्स देने जाऊँ, I would have done each of the static topics, as well as I would have solved a lot of questions, because until and unless you don't solve a lot of questions, you don't know कि where are you actually committing the mistakes. और I was advised कि बहुत ज़्यादा टेस्ट स्कोर्स पे ध्यान मत देना, क्योंकि वही है कि सेम पेपर नहीं आने वाला है जो आप टेस्ट पेपर अटेंड कर रहे हो, बट व्हाट द टेस्ट की जो लर्निंग्स है वो ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए फिर. तो इस तरीके से एक बैलेंस बना के रखिए. बहुत ज़्यादा एट द एंड एकदम टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि एकदम 4 दिन पहले 1 हफ्ते पहले टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है. उससे पहले ही आप टेस्ट देना, एटलीस्ट 2 महीने पहले आप टेस्ट देना सीरियसली शुरू कर दीजिए. शुरुआत में ऑफकोर्स नंबर कम आते हैं, सो डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि नंबर्स ग्रेजुअली बढ़ेंगे धीरे धीरे. जब आप देखोगे कि द मोर नंबर ऑफ टेस्ट यू गिव, द बेटर योर परफॉर्मेंस विल बी, धीरे धीरे अपने आप होती जाएगी. तो एक जब आपको सेटिस्फैक्टरी स्कोर आने लगे तो आप यू कैन एक्चुअली स्टॉप द गिविंग टेस्ट. बहुत ज़्यादा टेस्ट देने पे भी कई बार गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि फिर वो एक हमारे पास मेंटल हुआ जाता है कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, या फिर कैसे जो है उसी से हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. या गेस मार्क में भी अगर कई बार ऐसा होता है कि तुक्का लग गया और आपका सही हो गया और आपको लगा कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, तो ये सब चीज़ें एक्चुअल एग्जाम में तो नहीं चलती हैं. तो इस वजह से टेस्ट जितना आपको कंफर्टेबल लगता है, 30, 40, 50 जितने भी, मुझे तो 50 से टेस्ट तो एटलीस्ट मैं लगाता ही था, उससे ज़्यादा ही, बल्कि 50 टेस्ट से ज़्यादा ही लगाता था मैं. तो इतना करने के बाद एक अंदर से कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है कि ठीक है अभी आपका हो गया है और अच्छे स्कोर्स भी आपके आने लगे हैं, तो आई थिंक एक हो जाएगा. ऑफकोर्स प्रीलिम्स एक अभी ऐसा हो गया कि प्रीलिम्स इतना ज़्यादा डाइसी हो गया है, बिकॉज इतने ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आने लगे हैं. आई थिंक कॉन्फिडेंस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर क्लियरिंग द प्रीलिम्स. भले आपने पढ़ा जितना भी हो, नहीं पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, कम पढ़ा है, उससे मैटर नहीं करता ऑन द एग्जाम डे. व्हाट मैटर्स इज़ हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन टू क्लियरिंग प्रीलिम्स. अगर आप कॉन्फिडेंस से अच्छे से पढ़ के एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा. सो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो अगर प्रीलिम्स आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आपको कठिन लग रहा है तो बाकियों को भी कठिन लग ही रहा होगा. जैसे श्योर मतलब इतनी प्रिपरेशन आप कर लो, और एक बार आपकी उतनी प्रिपरेशन हो जाएगी तो फिर द कॉन्फिडेंस इज़ द की. फिर वहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए कॉन्फिडेंस इज़ द की, क्योंकि किसी को भी मतलब 30-40 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं प्रीलिम्स में. 30 भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बोल रहा हूँ, 30 क्वेश्चंस एग्जैक्टली किसी को आते हैं. उसके बाद आपको एक एजुकेटेड गेसेस लेने पड़ते हैं, एलिमिनेशन कराना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे कैसे आप ऑप्शन देख के आप किस तरीके से आंसर कर पाते हो. तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो टेक्निक्स जो हैं वो आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करके ही पता चलेंगी. तो इस तरीके से आप अगर आप यूज़ करोगे तो ईजी रहेगा. और स्पेशली प्रीलिम्स के बाद का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है, और उसमें बहुत सारे लोग 10 दिन तो सिर्फ की के ही उसमें लगा देते हैं कि इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा. तो वो मत करना बिल्कुल भी. जस्ट एक कोई भी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट की उठाओ, की उसे मिलाओ, जितना भी आपका बन रहा है, इवन इफ़ यू आर एट द बॉर्डर लेवल, तभी होल हार्टेडली मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए. और स्पेशली द फर्स्ट मंथ जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट निकले, एटलीस्ट आपका ऑप्शनल अच्छे से मतलब कुछ पार्ट हो जाना चाहिए. और जो भी हिस्ट्री का जैसे एथिक्स का हो गया जो कि मेंस में आने वाला है, उन सब चीज़ों पे आप पहले से फोकस करके रखो, क्योंकि इस अटेम्प्ट में नहीं भी हुआ तो भी वो आपका अगले उसमें यूज़ होने ही वाला है. तो जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं निकलता है आप मान के चलो कि आप सिलेक्टेड ही हो, पर जो भी रिजल्ट आएगा वो तो फिर आएगा ही आएगा. बट जब तक आप मान के चलो कि आप मेंस लिख रहे हो, और उसी मोमेंटम के साथ जैसे आपने प्रीलिम्स की भी तैयारी की है, उससे ज़्यादा मोमेंटम के साथ आप मेंस में जो स्पेशली ऑप्शनल और जो एथिक्स का है वो आप
अपना पढ़ाई शुरू करते रहो. मैम. Just a moment. I want to add something. I did not answer one part of the question. The 3 months between prelims and mains. So I think the master stroke to utilizing those 3 months is you have your optional at least one go prepared before those 3 months. What a lot of students do sometimes is prelims दे देंगे, फिर सोचेंगे optional कौन सा लेना है. अब मैं पब ऐड लूँगा, अब एंथ्रो लूँगा, अब कुछ और ऐसे देखते रहेंगे. दे विल फ्लिकर विद 2-3 ऑप्शनल्स. The best, what I did right was my optional was completed by December 2019. When I started, October 2019 I started, December 2019. I'm not saying that I knew every answer to every question, but I knew what the syllabus entails. Like, this is the topic, this is what my syllabus is, this is how, like what all writers, what all thinkers I need to prepare. I had an awareness of the syllabus. Then after that, if you have like 2 months more, by February, if you have a prelims in May or June, you can have a timeline of January, February, where you can invest some time in your optional. So invest that time in value addition. And then when you are done with your prelims, in between prelims and mains, you need to stick with your answer writing. You should not be worried about completion of your syllabus at that time. क्योंकि अगर आप already 2 महीने 3 महीने में से 1.5-2 महीने syllabus complete करने में invest कर देंगे, तो फिर आप answer writing कब start करेंगे, content कब improve करेंगे, speed कब बनाएंगे. So I think that is something which you need to be prepared beforehand, and most of you are appearing in 2022, so you can also do this. It's a good time to start your optional, and if you're prepared with your optional, it's a mental relief. आपको लास्ट मोमेंट पे ये टेंशन नहीं रहती कि अभी मेरा पूरा 500 नंबर का पेपर बचा हुआ है. दैट हेल्प्स.